Okay, so let me share the screen. हमने किया था ये Leibniz test, which says that when alternating series, suppose you have a series of this type, summation minus 1 raised to power n plus 1 in n, which means a1 minus a2 plus a3 minus a4. इस तरह से अगर alternate कर रही है कोई series, then अगर an और monotonic decreasing, यानी इस तरह से अगर ये terms हैं, और साथ में limit n approaches infinity, limit of an as n approaches infinity is equal to 0, and of course these ans had to be positive. अगर ऐसा है, then let me just get अगर ये condition is true है, then this series converges. Summation minus 1 raised to power n plus 1 a sub n runs from 1 to infinity converges. Not only that, it actually says more than that. ये actually इससे ज़्यादा information हमें मिलती है Leibniz test से, वो ये कि अगर हम इसका nth partial sum ले, यानी अगर Sn है बराबर a1 minus a2 plus a3 plus minus इसी तरह से and minus 1 raised to power n plus 1 n, then ये इसका nth partial sum है, ये जो converge करती है say to some L जो इसका limit होगा series का, modulus of Sn minus L would be always less than an plus 1. So that's information that we have. So by this I can say this series, ये series has summation minus n plus 1, 1 by n, ये सारे conditions satisfy करती है. यानी monotonic decreasing है 1 by n. So accordingly, under the Leibniz criterion, this converges. Furthermore, अगर Sn इसका मतलब ये जो ये series है ये क्या है? This is actually 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4. अगर मैं ऐसे ad infinitum जाऊँ, so this would converge to some L. Furthermore, ये भी है कि इसका जो nth partial sum है minus L would always be less than an plus 1, where this is my a1, this is my a2, this is my a3. यानी कहने का मतलब a1 plus a2 in this case minus L is less than an plus 1. Oh, sorry, minus plus, okay. So अगर मैं लूँ n equal to say 10, then जैसा कि मैंने last time किया, it would be 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on and so forth. यहाँ माइनस होगा और 10 वाली टर्म है तो ये होगा minus 1 by 10 minus this L is less than 1 by 11 because an plus 1 is 1 by 11. तो इससे हम L का एक बाउंड निकाल सकते हैं. जैसे अगर मैंने कहा था थोड़ा सा अगर तुम कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर पे, तो आई होप तुमने की होगी, तो तुम आराम से देख सकते हो if you take say n equal to 9, अगर तुम लोगे 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 plus so on and so forth plus 1 by 9 minus L is less than 1 by 10. अगर तुम थोड़ा कैलकुलेशन करोगे you would get L lies between, मतलब इसको कैलकुलेट करना है, ये कितना आएगा और ये कितना आएगा. So you can easily get that this L is less than 0.645, which is less than or equal to, that lies between this 0.8456. इस estimate से हम इसको improve कर सकते हैं. मैं यहाँ 20 terms ले सकता हूँ, तो ये better आएगा, it would be better and better. So मतलब you can get an estimate by Leibniz test कि कोई मतलब क्या होगा. अब हम इससे रिलेटेड थोड़े एग्जांपल्स कर सकते हैं. एक एग्जांपल तो हमने देखी. Now let's take another one.
जैसा कि स्थिति है, suppose you have an example this 1 by p minus 1 by 2 raised to power p plus 1 by 3 raised to power p plus minus 1 by 4 raised to power p plus minus ये जो alternative series है, when does it converge? And for what values of p would this series converge? For what values of p will this series converge? तो हमें अगर लेबनीज़ टेस्ट यूज करना है, so हम कहेंगे let an be equal to 1 by n raised power p. ठीक है ना? अब क्या हम देखते हैं, क्या ये पॉजिटिव, पहले हम देखेंगे ये पॉजिटिव कब है, तो हमेशा पॉजिटिव है, whether p is negative or positive. So this is always positive. वो तो है ही, मतलब नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं. जीरो हो सकता है अगर p जीरो हो, राइट? अदरवाइज नहीं, 1 होगा तब ये. Anything is for 0 is 1. तो ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, right? So the question is, when is it monotonic decreasing? क्योंकि अगर ये monotonic decreasing है, right? और monotonic decreasing के लिए हमें देखना होगा, देखो, when is the case that 1 is bigger than equal to 1 by 2 raised power p is bigger than equal to 1 by 3 raised power p is bigger than equal to this. यानी when is the case when 3 raised power p, या इस तरह से 2 raised power p is less than equal to 3 raised power p, मतलब इसके लिए p का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि फिर ये बन जाएगी एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस. तो व्हेन वुड दिस बी, नाउ अगेन ऑफ कोर्स पहले हम चेक करेंगे ये कब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, उसके लिए हमें देखना है ये कब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है. नाउ वी नो दैट x raised power p is an increasing function if p is positive. तो अगर p positive है, then this is the, for p positive this is true, it means for p positive it is monotonic decreasing terms जो इसके है ना ये without sign. So हम लिखेंगे now 1 is greater than equal to 1 by 2 by p plus 1 by 3 raised power p, so on and so forth for all p positive. That is, I've got a1 is bigger than equal to a2 is bigger than equal to a3, and a monotonic decreasing for p positive. And दूसरा है limit, does it approach 0? Now limit n approaches infinity, 1 by n raised power p. Again, of course, when p is positive, it would stay in the denominator, so it would become very large in the denominator, so it would be 0. So सारी conditions satisfy होती है provided p is positive. So therefore, by Leibniz test, summation minus 1 raised power n plus 1, 1 by n raised power p converges when p is positive. Okay. Now how about this? अब एक और ले सकते हैं, question number क्या है इसका, एक exercise हम कर सकते हैं. Suppose this x is not an integer, and it's a fraction, some other number, whatever, लेकिन कोई fixed number है, is not an integer. मतलब through that अगर मैं series फिर लेता हूँ 1 by x plus 1 minus 1 by x plus 2 plus 1 by x plus 3 minus इस तरह से हो जाएगा, right? So let an be equal to 1 by x plus n, so that the given series क्या बनेगी, summation n runs from 1 to infinity minus 1 raised power n plus 1 an. ये बन गई अब Leibniz series. अब हमें दिखाना है अगर ये converge करती है. Now further, clearly 1 by x, a1 is bigger than equal to a2 is bigger than equal to a3. ये तो बिल्कुल easy है. Why? Because x plus 1 is less than equal to x plus 2 is less than equal, x कुछ भी हो, ये तो हमेशा true है. This is true for all x. ये increase ही होता जाएगा क्योंकि हम इसको add कर रहे हैं ज्यादा बड़ा नंबर. So therefore 1 by x plus 1 जो कि मेरा a1 है, right, is bigger than equal to 1 by x plus 2 जो कि मेरा a2 है, and so on and so forth. So that is an जो है
it is monotonic decreasing. Monotonic decreasing, right? And limit, of course, n approaches infinity, n is equal to 1 by x plus n, right? X plus n. So that would be what? Equal to 0 because x is fixed. क्या फर्क पड़ेगा x से? So सारी condition satisfy होती है. So therefore by Leibniz test, what do we have? Summation जो अपना था, summation n runs from 1 to infinity minus 1 raised to n plus 1 by x plus n, which is the same as 1 by x plus 1 minus 1 by x plus 2. थोड़ा सा गलत तो नहीं हो गया ये इंडेक्स हमारा? अगर n 1 है तो ये पॉजिटिव है, n अगर 1 है तो ये पॉजिटिव है, n अगर 2 है तो ये नेगेटिव है. हाँ, क्योंकि ये 3 आएगा, ठीक है. तो ये कन्वर्ज करनी चाहिए. ओके, इसी तरह से इसने किया है, शो दैट दिस डाइवर्जेस. 2 minus 2 raised to power 1 by 2 plus 2 raised to power 1 by 3 minus 2 raised to power 1 by 4. So ये diverge करेगी. Now here an जो है, it is actually minus 1 raised to power n plus 1 to 2 raised to power 1 by n. And limit n approaches infinity, an would be equal to limit n approaches infinity minus n raised to power n plus 1 2 raised to power 1 by n. Of course, any number p अगर positive है, p raised to power 1 by n इसका limit जो है is equal to 1. So अगर इसका limit 1 है, ये या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है. So it would be either +1 or -1. So it is never 0, because this is equal to +1 or -1. तो अगर लिमिट जो nth टर्म 0 नहीं करती, so therefore I can say summation n runs from 1 to infinity, that's equal to 2 minus 2 raised to power minus 1 by 2. It cannot converge, क्योंकि अगर लिमिट nth टर्म का 0 नहीं होता तो कभी कन्वर्ज नहीं करता. ये हमने पहले ही रिजल्ट किया था. इसी तरह से ना ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, इसका एक बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का. शो दैट 1 by 2 plus नहीं minus 1 minus 2 square root of 2 plus 1 minus cube root of 2. अगर मैं plus minus ऐसे ही करूं, show that this, मैं तुम पे छोड़ता हूँ, show that this converges. और तुम्हें यूज करना है ऊपर जो हमने लिखा, show that this series converges. ये तुम्हारा होम असाइनमेंट. सिमिलरली एक और होम असाइनमेंट है जो जैसे हमने ये किया वैसे ही करना है. show that summation n runs from 1 to infinity minus 1 raised to n plus 1 n divided by 2n minus 1 diverges. तो ये भी तुम्हारा होम असाइनमेंट, इसका बी पार्ट भी तुम्हारा होम असाइनमेंट. ओके, तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो हमने थोड़ा की. नेक्स्ट जो हम करेंगे, इट्स अबाउट व्हाट वी कॉल कंडीशनल कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस. Conditional convergence and absolute convergence. अभी हमने देखा एक सीरीज में, जैसे पर्टिकुलर दिस सीरीज, इट्स एन इंपॉर्टेंट सीरीज, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आई स्टैंड बाय दैट. ये जो है, we know that this converges, but अगर मैं लेता हूँ summation n runs from 1 to infinity 1 by n, this diverges. Or I can say summation n runs from 1 to infinity modulus of minus 1 raised to n plus 1 divided by n diverges. Although अगर mod हटा दे तो ये converge करती है, mod लगाएं तो ये diverge हो जाती है. So इस situation में हम कहते हैं कि
जो मतलब कभी कभी इसका बिल्कुल मतलब उल्टा भी होता है। सपोज अगर मैं ये लूं, अगर हम ये एग्जाम्पल लें, अगर मैं ये एग्जाम्पल लूं, 1 -1/2 +1/4 -1/8 +1/16 और 1 +1/2 +1/4 +1/8 +1/16, तो ये दोनों कन्वर्ज करती है। Both would converge. This would converge by Leibniz test, or this would converge because it's a geometric series. लेकिन यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कभी कभी क्या हो सकता है, you can have summation, जैसे इस केस में an converges but summation an जो है वो diverge करेगा, और कभी कभी यह both converges, यानी summation an भी converge करेगा और अगर मॉड लगा दें इसको तब भी कन्वर्ज करेगा, जैसे ये एग्जांपल हो, ये एग्जांपल। सो इसके लिए हम थोड़ा इस सिचुएशन को मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। सो लेट मी डिफाइन इट। सो let an be a series of real numbers, a summation an runs from 1 to infinity, be a series of real numbers then if summation n runs from 1 to infinity, an converges, we say that summation n runs from 1 to infinity, an जो है it converges absolutely. b, लेकिन अगर ऐसा होता है if summation an तो converge करता है, summation an तो converge करता है, but summation modulus of an does not converge or diverges and runs from 1 to infinity, we say जो ये series है and runs from 1 to infinity, it converges conditionally. यानी हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से अब ये जो सीरीज है, देखो यहाँ पे ये तो कन्वर्ज करती है, लेकिन इसका जो मॉड्यूला है वो डाइवर्ज करता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल कन्वर्जेंस, एंड ऑफ कोर्स ये जो एक एग्जाम्पल है, दिस इज ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ओके, नाउ हम दिखाएंगे अगर कोई सीरीज कंडीशनली एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, then it converges, it must converge. लेकिन अगर कोई सीरीज, we know that ऐसा हो सकता है कि कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्ज करे लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्ज ना करे। सो लेट मी क्लियर दैट बाय मींस ऑफ दिस थ्योरम। एक छोटा सा थ्योरम हम कर सकते हैं, वो ये let me write it down. If summation n runs from 1 to infinity, an converges absolutely, then summation n runs from 1 to infinity, an must converge. And an absolute convergence implies convergence. So let's do the proof. Proof ज़्यादा मुश्किल है नहीं. So let Sn be equal to the nth partial sum of the given series. तो हमें अगर दिखाना है ये converge करती है, we have to show that its sequence of its partial sums converges. Okay. Okay, so we wish to prove that, yeah, we have to prove that
Sn converges as a sequence. Converges, but it is sufficient to show that this is a Cauchy sequence, because every Cauchy sequence converges in real numbers. So is a Cauchy sequence. तो हम दिखाएंगे कि Cauchy sequence. Now let Pn be equal to a modulus of A1 plus modulus of A2 plus modulus of An. It means that Tn is the nth partial sum. किसका nth partial sum है? Summation modulus of An, n runs from 1 to infinity. और हम ये assume कर रहे हैं summation n runs from 1 to infinity, An converges. Absolutely, ये मेरा assumption है. So which means that summation n runs from 1 to infinity. तो absolute convergence का मतलब है इसका अगर हम मॉडुलर लगाते हैं terms को तो ये converge करता है. So if summation n runs from 1 to infinity converges absolutely, ये जो sequence है Tn की n runs from infinity, it converges. और अगर ये converge करता है तो it should be Cauchy, and hence it must be a Cauchy sequence. Cauchy sequence की definition use करेंगे. Must be a Cauchy sequence because Cauchy general principle of convergence says if the sequence is Cauchy, it converges, and if it converges, it must be Cauchy. Now, Cauchy की definition क्या है? Thus, for any epsilon positive, there exists some natural number n naught such that modulus of Tm minus Tn is less than epsilon for all n bigger than, I should write m bigger than or equal to n. Now, if I look at this, my Sm minus Sn, now to remember what is this? This is, I should write, it would be basically what? Let me write it down this way. It would be m से मैंने n terms निकाली दी, तो इसका मतलब it should be am plus 1 plus am plus 2. नहीं, n निकाली मैंने, तो थोड़ा मैंने n मैंने बाहर निकाली m sum से, तो I should get Sn plus 1 plus Sn plus 2 plus so on and so forth up to Sn बचनी चाहिए. ओ मैंने गलत लिखा. Am. But this is less than equal to by triangle inequality an plus 1 plus an plus 2 plus so on and so forth plus an, which by the definition of Tn involves the partial sum of the moduli, so it should be equal to modulus of Tm. Actually, it should be equal to Tm minus Tn. लेकिन चूंकि ये नॉन नेगेटिव होगा तो मॉड लगा सकते हैं. So this would be less than epsilon for all m greater than n naught, and which implies that जो Sn है ये Cauchy sequence है. Cauchy sequence है तो convergent है. So it is sufficient. So therefore यही तो हम प्रूव करना चाहते थे कि summation n comes from 1 to infinity converges. तो कहने का मतलब अगर कोई ये कहे तुम्हें कि ये converge करती है ये sequence, it would imply that summation an converges, right?
एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस implies convergence. लेकिन कन्वर्स हमने देखा एग्जाम्पल में कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. व्हाई? एग्जाम्पल हमने इससे पहले ही की थी. वो क्या कि summation minus 1 raised to power 1 by n plus 1 and runs from 1 to infinity does converge, but इसका जो मॉड्यूलस है summation n runs from 1 to infinity mod of ये mod लगाएंगे तो ये converge नहीं कर, does not converge. So it was about this conditional convergence and अब हम conditional convergence के बारे में मतलब इनको फर्क कैसे करें. अगर मेरे पास कोई सीरीज है कि मतलब इसको किस तरह से हम मतलब हैंडल करें, मतलब हम कैसे पता करेंगे whether it is conditionally convergent or not सीरीज को देख के. तो उसका पहला ये है हम एक थ्योरम कर सकते हैं. वो ये पहले हम थोड़ा डिफाइन करेंगे. नाउ लेट ओके सो एक डेफिनेशन हम यूज करेंगे. लेट अस डिफाइन इट फॉर इट इज नॉट अ definition, no, it's a definition for our theorem. उसके लिए हमें ये चाहिए. So let summation an runs from infinity be a series of real numbers. अब इसमें कुछ टर्म्स पॉजिटिव हो सकती है, कुछ टर्म्स नेगेटिव हो सकती है. जो a n है, it need not be, all of them need not be positive. So what we do, करेंगे let p sub n be equal to a sub n if a n is positive, and let us make it 0 if a n is either 0 or negative. तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे लिखूं, मैं कह रहा हूँ Pn is maximum of an, 0, क्योंकि maximum of an, 0 किसके बराबर है? It's obviously क्या कहते हैं, मतलब इसका मतलब क्या, अगर an पॉजिटिव है तो ये an हो, राइट. और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव और 0 से बड़ा कौन है? 0. मतलब यही है इसका. I could have written it directly like this, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सीरीज है 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4, इसके लिए P1 क्या होगा? मैं चेक करूंगा क्या A1 पॉजिटिव है. यस, तो सीधे लिखूंगा. व्हाट वुड बी P2? अब मैं चेक करूंगा क्या ये नेगेटिव है. हाँ, दूसरी टर्म नेगेटिव है तो यहाँ 0 होगा. मतलब इसी तरह से P3 होगा 1 by 3, P4 होगा 0. तो मैंने गिवन सीरीज से एक और सीरीज डिफाइन की, राइट. मुझे एक और सीक्वेंस मिली जिसको मैं सीरीज लिख सकता हूँ फिर, जिसमें खाली पॉजिटिव टर्म्स काउंट होती हैं, बाकी सारे 0, राइट. सिमिलरली वी कैन डिफाइन Qn to be An if An is negative and we put it equal to 0 if An is positive. ठीक है. तो it is again I can say this is just Pn is the minimum of An and 0, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली मिनिमम छोटा कौन है? नेगेटिव वाला नंबर, तो वो आ जाएगा. और अगर ऑफ कोर्स ये 0 मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो 0 पॉजिटिव से छोटा है तो हमें 0 मिलेगा. तो मतलब इसकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन ये हो सकती है. तो अगर मैं इस सीक्वेंस को कहूँ, इसमें Q1 क्या होगा? Q1 0 आएगा क्योंकि पहली टर्म पॉजिटिव है. तो Q2 क्या आएगा? -1 by 2. Q3 क्या आएगा? अगेन 0. Q4 क्या आएगा? -1 by 4. यानी एक सीक्वेंस की मदद से जो पॉजिटिव, मतलब ये तो एक एग्जांपल है, और भी हो सकती है टर्म्स. हो सकता है किसी की पहली 10 टर्म्स पॉजिटिव हो, फिर 10 टर्म्स नेगेटिव हो. तो उसमें क्या आएगा? P1 में आएगा, P1 से P10 तक तो टर्म्स आएंगी, लेकिन 10 से फिर 20 तक जहाँ नेगेटिव टर्म्स हैं वहाँ 0 आ जाएंगे. Pn जो हमने यहाँ डिफाइन किया, ये जो Qn डिफाइन किया, ठीक है. नाउ फर्दरमोर there is an easy, जो मैं तुम्हें एक होम असाइनमेंट दे सकता हूँ, वो ये कि अगर A and B are any real numbers, then
maximum of AB is always equal to A plus B minus modulus of A minus B divided by 2. वो इसलिए सपोज A बड़ा है, राइट, तो ये A अगर बड़ा है तो ये होगा A प्लस बी, यानी फिर A माइनस बी, अगर A बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये अपने मॉड के बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। तो अगर ये इसके बराबर है देन इट वुड बी, जो मैक्सिमम होगा वो क्या होना चाहिए, अगर ए बी से बड़ा ए आना चाहिए, तो ए ही आएगा, बिकॉज इट इज ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव है तो मैंने इसको, हाँ यहाँ प्लस होना चाहिए, सॉरी, देखा, जब इंसान ट्राई करता है तो उससे क्लियर हो जाता है कि मैंने गड़बड़ की। सो ये कैंसिल हो गया, सो इट वुड बी 2b/2 2a/2। सो दिस इज द डेफिनेशन। ये तो प्रूव कर सकते हैं, चाहूँ ये तो प्रूव करवाना होम असाइनमेंट, एंड मिनिमम ऑफ ए पी जो है वो बराबर होगा, अब बताइए वो क्या होना चाहिए, जो हमने अभी गलती की थी वही। सो दिस इज होम असाइनमेंट, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब अगर मैंने ऐसे डिफाइन किया, सो इसका मतलब जो मैंने ये पी एन डिफाइन किया, ये किसके बराबर है, दिस इज मैक्सिमम ऑफ ए एन जीरो। अगर मैं ये जो होम असाइनमेंट वाला आइडिया यूज करूं, दिस शुड बी एक्चुअली an plus 0 plus modulus of an minus 0. So that would be divided by 2. That would be, of course, an plus modulus of an divided by 2. Or I can say an plus modulus of an is equal to twice pn. इसी तरह से qn क्या है, qn is equal to minimum of an 0, और अगर मैं वो होम असाइनमेंट वाला यूज करूं तो इट वुड बी an plus 0 minus modulus of an minus 0, that is divided by 2, so that would be just an minus modulus of an divided by 2. So in general जो हमने अभी डिफाइन किया उस हिसाब से, जो एक सीरीज की मदद से हमने या एक सीक्वेंस की मदद से दूसरी सीक्वेंस डिफाइन की, उनमें जो आपस में रिलेशन है वो ये है कि twice pn is equal to an plus modulus of an, or twice qn is equal to an minus modulus of an. अब and of course अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या मिलेगा, तो you should get, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या, an is equal to pn plus q होगा ना, ऐड करो, twice an is equal to twice pn plus twice qn, that means an is equal to, अब इस डेफिनेशन के बेसिस पे हमारा एक थ्योरम है जो हम करेंगे। थ्योरम ये कहता है, दो हिस्से हैं इसके, if summation n runs from 1 to infinity an, सर, हाँ हेलो सर जब आपने अभी किया ना क्यू एन डिफाइन, हाँ हेलो सर, हाँ बताओ, अभी किया ना आपने क्यू डिफाइन, आपने लिखा सर आप बैक करो एक पेज, हाँ आपने हाँ, क्यू मैंने एन किया, किया ना डिफाइन, हाँ क्यू एन इज इक्वल टू ए एन इफ ए एन इज लेस और इक्वल टू 0। बिल्कुल, अगर ए एन है लेस और इक्वल टू, उस टाइम ए एन ही आएगा वापस या माइनस ए एन आएगा वापस, क्योंकि आपने एग्जांपल में लिखा फिर -1/2 -1/4। क्योंकि जब भी मैं an लिखता हूँ ना साइन, ये तुम्हें ध्यान रखना, राइट, तो इट इज इंक्लूडिंग द साइन, ठीक है, वरना तो सारी पॉजिटिव टर्म्स है ना। मेरी बात समझ में आई, जब मैं सीरीज लिखता हूँ उसका मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब है an plus a2 plus a3, है ना, सीरीज में ऐसे लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं, यस सर। तो उसका मतलब क्या होगा, जब मैं लिखूंगा 1 - 1/2 तो a2 क्या होना चाहिए, -1/2, क्योंकि यहाँ मैं प्लस लिख रहा हूँ ना हर जगह, हाँ, लेकिन कभी कभी मैं अब ऐसे लिखता हूँ, हाँ मैं समझता हूँ इससे कंफ्यूजन हो सकता है ना, राइट, लेकिन इसका मतलब है nth टर्म क्या है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है इसकी a1, दूसरी टर्म क्या है इसकी a2 नहीं -a2, है ना, क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं ना। मेरी बात समझ में आ रही, इन जनरल जब भी तुम्हें सीरीज में दिखे तो चूंकि हम प्लस प्लस कर रहे हैं तो हमें साइन को इंक्लूड करना है,
क्योंकि सम का मतलब क्या है, सम का मतलब है ऐड नॉट सब्ट्रैक्ट। एनीवेज ओके, सो वंस हमने ये डिफाइन किया तो अब ये थ्योरम है कि इफ दिस सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, बाय दैट आई मीन अगर मैं मॉडुलाई लेता हूं फिर अगर ये कन्वर्ज करती है, देन बोथ जो इसके ये कंस्टिट्यूएंट टर्म्स हैं, both summation n runs from 1 to infinity an, pn, and summation n runs from 1 to infinity qn converge. b, but if it converges conditionally, यानी converge तो करती है लेकिन इसका मॉडुलस converge नहीं करता, तो ये दोनों diverge करेंगे conditionally, then both of these series जो हमने इसकी positive terms और negative terms को अलग किया, तो वो दोनों की दोनों diverge करेंगे, both diverge। एक्चुअली ये खत्म होने वाला है लेकिन ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। प्रूफ क्या है कि सपोज ए में कह रहा है कंडीशनली, तो सपोज चलो कल करेंगे राइट, लेकिन मैं चाहूंगा अभी और कोई अगर 1-1.5 मिनट में हम कोई क्वेश्चन ले सकें या तुम कोई क्वेश्चन पूछ सको इसके रिगार्डिंग जो हमने पढ़ा, सो लेट्स डू। और ये अच्छा है तुमने रोका है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू मस्ट स्टॉप अ टीचर जब कुछ समझ में ना आए। और एनीबॉडी एल्स, क्योंकि वी हैव गॉट अराउंड अ मिनट, सो मैं किसी और को कुछ पूछना है? सर माइनस ही ले सकते हैं वहाँ, कि थोड़ा कंफ्यूजन करता है। माइनस मैं वो कह रहा हूँ, तुम जो सम लिखते हो ना, सम का मतलब क्या है? सर नोटेशन के लिए ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं ना, जब पीएन बी डिफाइन हम करते हैं उसमें एएन लेते हैं, जब क्यूएन बी डिफाइन करते हैं इसमें एएन लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करता है, लगता है सेम, इसलिए। सेम नहीं है ना, राइट पे लिखा है ना पॉजिटिव, वही तो सीखना है ना तुम्हें नोटेशन में, वही तो तुम्हें सीखना है कि तुम अपनी मर्जी से नहीं चलाओगे, तुम जो हमने जिस तरह से किया है बुक्स में या जिस तरह से हम उसको अच्छे तरीके से समझा सकें थ्योरम या उसको प्रूव कर सकें अच्छे से, हम वही नोटेशन यूज करेंगे। तो अगर मैं कहूंगा मॉड x इज इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव, तो इट इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, तुम कहोगे नहीं नहीं ये आपने क्यों किया ये जरा, लेकिन यू हैव टू, मतलब तुम्हें इस ये जो राइट हैंड ये जो यहाँ पे लिखा है इफ अंडर व्हाट कंडीशन, वो तुम्हें लेनी है इनटू अकाउंट हमेशा, नॉट जस्ट दिस केस, कहीं भी जो इफ लिखा है इधर वो इम्पोर्टेंट है, कब ये इसके बराबर होगा और कब ये इसके बराबर, तो यू हैव टू कीप दैट इन कंसिडरेशन।